Assalamualaikum students. Illustration number 11. From the following is the balance sheet on 1st April 2019 and receipt and payment account of Dayanand Library, Amba Jogai. You are required to prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and a balance sheet as on that date. So this is students, our year start from 1st April 2019 and ends on 31st March 2020. First balance sheet as on 31st March 2019. Listen, it's a opening balance sheet, right? Because our year start from 1st April 2019 and it's a opening balance sheet and the balance sheet date in 31st March 2019. So through this balance sheet we can get an opening balances. So first liabilities, capital fund 7,50,000, subscription received in advance 3,000. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मीन्स ये हमें 2019 में सब्सक्रिप्शन मिला था, मीन्स 18-19 में मिला था एडवांस. तो कौन से साल का एडवांस है वो? 19-20 का एडवांस है. मीन्स हमको सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर में मिला था करंट ईयर के लिए. देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000. कम टू असेट साइड, फर्नीचर 50,000, बुक्स 6,50,500, स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प 500, investments in securities 7,000, cash in hand 7,000, cash at bank 40,000. Both sides same total 7,55,000. Now come to receipt and payment account for the year ending 31st March 2020. First receipt side to balance brought down cash bank. Next to members subscription, to entrance fees, to sell of old newspapers, to hire of lecture hall, to interest on securities, to life membership fees. Come to payment side, buy salaries, buy purchase of postage stamps, buy books in bracket purchased on 1st 10th means 1st October 2019. So listen students, it's a purchase बुक्स का और जो भी हमारे पास असेट्स है उसका ओपनिंग बैलेंस मीन्स द बैलेंस शोज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द करंट ईयर जो है ओपनिंग बैलेंस शीट पे दिया हुआ है. नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड बाय इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट, बाय फर्नीचर अगेन सेम इन ब्रैकेट परचेस्ड ऑन 1st/7/2019 मीन्स 1st July 2019. नेक्स्ट बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाय रेंट and by balance carried down cash and bank. Come to adjustment number 1, depreciation on book at the rate 10% per annum. Now listen students, बुक पे 10% depreciation लेना है. अब यहाँ पे देखो बुक के दो अमाउंट दिए हुए. एक ओपनिंग बैलेंस शीट में अमाउंट कितना है 6,50,500 और एक रिसिप्शन पेमेंट साइड में अमाउंट कितना दिया हुआ है 1 लाख. तो जो 6,50,500 है ये हमारा कंप्लीट होल ईयर के लिए यूज़ हुआ है, राइट. और जो बीच में दिया हुआ है क्वेश्चन में पेमेंट साइड, वो हमारा बुक्स हमने परचेज़ किए हैं 6 मंथ के लिए, मींस इसको हमने अक्टूबर में परचेज़ किए. सो 6,50,500 पे पूरा 10% डेप्रिसिएशन आएगा एक साल के लिए. सो अमाउंट इज 65,050 एंड द रिमेनिंग 1 लाख इज़ यूज फॉर 6 मंथ, राइट. So 10% on 1 lakh for 6 months, that is 5,000. So total depreciation on books कितना होगा 70,050. 65,050 पूरे साल का आया, 5,000 जो हाफ ईयर का आया, टोटल कितना हुआ 70,050. Depreciation on furniture at 8.5% per annum, सेम बुक के तरह ही करेंगे because there are two amounts shows on furniture. First shown on opening balance sheet and second amount shows on the payment side, right. So opening amount में balance sheet में हम कितना amount दिया हुआ है 50,000 which is used for the complete whole year. So 50,000 multiplied by 8.5%, so amount कितना आएगा 4,250 and remaining 30,000 is shown on the payment side और ब्रैकेट में लिखा हुआ है परचेज ऑन 1st July 2019 मीन्स फॉर 9 months वी हैव टू यूज़ दिस फर्नीचर.
सो 8.5% का कितने मंथ के लिए हम लेंगे, 9 मंथ के लिए लेंगे. सो 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 8.5% फॉर 9 मंथ. सो अमाउंट कितना आएगा, 1912. सो 4,250 प्लस 1912, तो टोटल फर्नीचर एप्रिसिएशन कितना होगा, 6,162. थर्ड एडजस्टमेंट, 50% एंट्रेंस फीस एंड होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड. तो हम क्या करना है, एंट्रेंस फीस में से हाफ को कैपिटल फंड में ऐड करना है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, और लाइफ मेंबरशिप पूरी के पूरी कैपिटल फंड में ऐड करना है. नेक्स्ट, लाइब्रेरी हैड 2,000 मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन 100 ईच. लाइब्रेरी में कितने मेंबर है, 2,000 मेंबर है, जिसमें से हर कोई कितना सब्सक्रिप्शन पे करेगा, 100 ईच. मीन्स व्हाट, 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना होगा, 2 lakhs. ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट है कि इसमें काफ़ी सारे आपको डाउट्स आते हैं, सारा कैसा सॉल्व किया, एक ध्यान से सुनना. कितने मेंबर्स है, 2,000, और हर एक कितना पे करेंगे, 100. सो 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो कितना पे हुआ, टोटल 2 लाख रुपीज़. बट यहाँ पे रिसिप्ट साइड हमें कितना मिला है, सब्सक्रिप्शन 1,80,000, राइट. जबकि मिलना कितना चाहिए था, हमें 2 लाख रुपीज़ मिलना चाहिए था. हमें कितना मिला है, ओनली 1,80,000 हमें मिला है. सेकेंड देखो, ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मीन्स करंट ईयर में से ही हमको कुछ सब्सक्रिप्शन पहले मिला है. कितना पहले मिला है, 3,000. सो 1,80,000 प्लस 3,000 कितना हुआ, 1,83,000. स्टिल 17,000 अब तक हमें मिलना बाकी है, बराबर. बिकॉज टोटल सब्सक्रिप्शन कितना होता है, टोटल सब्सक्रिप्शन होता है 2 लाख रुपीज़, जिसमें से हमें 1,00,000 अभी तक के मिला है. तो 17,000 स्टिल पेंडिंग, कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. And last, the value of unused postal stamp ₹200. It's called closing balance of postage stamp. Clear? Now move forward to the solution. First heading in the books of Dayanand Library, Amba Jogai, income and expenditure account for the year ending 31st March 2020. First expenditure side, number 1 to salaries, outer column 24,000. Next to postage, underline opening stock. Opening stock of postage कितना दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस शीट में, 500 रुपीज़, इनर कॉलम. एड परचेसेस हमें दिया हुआ है पेमेंट साइड में, कितना है, 1,500. सो 500 प्लस 1,500, इनर कॉलम 2,000, लेस क्लोजिंग जो हमें एडजस्टमेंट नंबर 5 में दिया हुआ है, इनर कॉलम 200. सो आउटर कॉलम 1,800. नेक्स्ट टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आउटर कॉलम 6,000. टू रेंट, आउटर कॉलम 18,000. नेक्स्ट टू डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन बुक्स, inner column 70,050. furniture, inner column 6,162. outer column 76,212. Now come to income side. Number 1, by members subscription, inner column 1,80,000 shows on receipt side. Add subscription received in advance 3,000, which shows on opening balance sheet liability side. And add outstanding subscription 17,000. So outer column 2 lakhs. Why? Because there are 2,000 members paying subscription of ₹100 each. Shows on adjustment number 4. Right? तो हमें टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए था, 2 लाख. हमें रिसीव कितना हुआ, 1,83,000. So 17,000 called outstanding subscription. Next, by entrance fees, there is an adjustment on entrance fees. So write in inner column 30,000 less 50% capitalized, inner column 15,000, outer column 15,000 less. Next, by sale of old newspaper, outer column 2,000. By hire of lecture hall,
outer column 10,000. Buy interest on securities, outer column 10,000. Now all the items have been posted in expenditure and income side. Now after completion of expenditure and income side, we have earned surplus, and the surplus amount is 1,05,988, and surplus called excess of income over expenditure. Now move forward to the balance sheet. First heading, balance sheet as on 31st March 2020. First we complete the liability side. Number 1, capital fund shows on the opening balance sheet. Inner column 7,50,000. Add 50% entrance fees. Inner column 15,000. Add life membership fees. Inner column 10,000. Add surplus. Inner column 1,05,988. So outer column 8,80,988. Come to asset side. Number 1, cash in hand 9,500. Next, cash at bank 43,000. Next, furniture, inner column 50,000, and 50,000 shows on the opening balance sheet. Add purchases 30,000. This 30,000 shows on payment side. So 50 plus 30, inner column 80,000, less 8.5% depreciation 6,162. So outer column 73,833. Next, books, inner column 6,50,500. These amount shows on the opening balance sheet. Add purchases 1 lakh. This amount shows on the payment side. So 7,50,500, less depreciation 70,050. So outer column 6,80,450. Next, stock of postage stamp 200. Investment in securities 7,000. Investment in fixed deposit 50,000. Outstanding subscription 17,000. Now income and expenditure and balance sheet is over, and after completion of balance sheet, our balance sheet is tally, and the tally amount is 8,80,988. 8,80,988. Clear, students? So inshallah in the next lecture we move forward to the next question. Okay, thank you. Assalamu alaikum.